चलिए स्टार्ट करिए प्रोग्राम। जी सर। Thank you, sir. So I welcome one and all in today's afternoon session. Our today's resource person is Mr. Saket Singh Kaurav sir. Kaurav sir, sorry. He is a he is a curator E and project coordinator at Regional Science Center Bhopal. He has a scientific background in physics and also having a research a, and research experience in astronomy and astrophysics. He has a 14 years experience in which he has conceptualized, designed, developed, and curated the thematic, that is the Hall of Aviation and Space, and the traveling science exhibitions he has arranged with the different subjects. And he has also driven the educational programs and activities for the general public and students. Currently, he is heading the Regional Science Center Bhopal, which is a unit of the National Council of the Science Museum and non-profit scientific organization under the Ministry of Culture, Government of India, as a project coordinator. So before joining RSC Bhopal, he worked as a National Council. He worked at the National Council of the Science Museum headquarters in Kolkata and in the Nehru Science Center, Mumbai also. Uh, Apart from that, he is a science writer contributing the popular science articles in English and Hindi to the leading science magazines and newspapers. And he is also an amateur photographer. So such a versatile personality is between with us in this today's afternoon session. So I welcome Mr. Saket Singh Kaurav sir on behalf of MM-TTC RDVP Jabalpur, and I request him to deliver his lectures. Thank you, sir. Over to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द फैकल्टीज एंड टीचर्स ऑफ आरडीबीबी। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जी हाँ, नमस्कार। मैंने कहा मैं सभी आरडीबीबी की फैकल्टीज और जो भी इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, जो इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं और जिनकी सपोर्ट से हो रहा है, और हमारे माननीय चंडोक सर, जो मेरे लिए एक ऑनर एंड प्रिविलेज की बात है कि मैं जिस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ, छोटे सेशन में, वो एक जिम्मेदारी के रूप में मुझे हमारे ही सर ने दी है। और कहीं ना कहीं इस जर्नी में मेरी जो फिजिक्स की या रिसर्च की जर्नी की यात्रा है, साइंटिफिक जर्नी की, उसमें सर से बहुत भौतिक रूप से सीखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला, जिसने एक नया आयाम दिया। कैसे एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में फिजिक्स जैसे विषय को इतनी रोचकता से प्रस्तुत कर सकता है कि वो विषय सिर्फ एक्सपर्टाइज के रूप में बस काम ना करे, आगे जाके वो कम्युनिकेशन ऑफ साइंस के रूप में भी परिवर्तित होने के लिए एक फाउंडेशन बन जाए। उसके लिए मैं चंडोक सर का भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का, फैकल्टीज का, जिनके मार्गदर्शन और गुरु लोगों के नेतृत्व में लीडिंग जर्नी इस फील्ड में रह पाई। जैसे कि आपने कहा है, ये सर ने भी मुझे अवगत कराया है, और ये बड़ी सम्मान की बात है कि आपका जो रिफ्रेशर कोर्स है उसमें मुझे भी हिस्सा बनाया जा रहा है। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि हम अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से साइंस सेंटर या साइंस म्यूजियम्स को भी अपना इंटीग्रल पार्ट बनाएं, या ऐसे नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को या संस्थानों को जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या लर्निंग बाय डूइंग या पार्टिसिपेटरी अपॉर्चुनिटीज देते हों। देखो, I think it is very important and essential at the same time, because what we have observed over the years, India's contribution in fundamental research is not up to that mark which we are expecting as one of the global emerging power in the field of science and technology. Our research index or peer-reviewed journal publications are indicating that
we have a large scope and big role to play in coming years. The way we have been publishing our research and work, definitely that is the reason India is, playing a critical role on a global map. And that is the main concern also, bringing a new paradigm shift in the field of fundamental research, fundamental sciences. It starts from the undergrad level. The moment we finish our school education and we entered in colleges, from that time onwards, I think it is very critical framework for learning or growing at the same time. We generally believe that scoring higher marks or maybe scoring or getting good position in the subject may lead to us on a bigger scale or on a successful path. But sometimes, as this course suggests, refresher course for basic sciences, it means you are understanding how you can apply that knowledge to the field and how you can use that knowledge and experience in the day-to-day life or in your research career or in the field. It highly depends on your experimental learning attitude. India was, is, and maybe in future will always be a leading nation in the theoretical physics. And there is no doubt of even if an iota that India is doing excellence, doing great work in the field of theoretical physics or theoretical subjects. But as far as experimental physics or experimental sciences are concerned, maybe chemical sciences, biological sciences, just for my understanding, I want to understand these teachers are basically from which subject? Physics, chemistry, और बायोलॉजिकल साइंसेज. कृणाल जी आप बताएंगे. आपका माइक म्यूट है आई थिंक. हेलो, आपका माइक म्यूट है कृणाल दत्तात्रेय जी. आई थिंक समवन इज. हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? पर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. Okay, all streams. Thank you. Thank you, Dr. Hammond, for pointing me. It is very important, and I think as we are progressing and we are growing as a nation, as we all are concerned about the progress of country, and we want Atmanirbhar Bharat by 2047. So this Atmanirbhar Bharat is not only a political will; it is a very big responsibility from scientific field, scientific stream as well, because we have to grow in all perspective and all respect. For that matter, our foundation needs to be very strong. And our laboratory experience, which we have been observed, our laboratory experience is really, scary. We need to invest a quality of time so that our students can actually spend their quality of time in learning by doing in the laboratories. Laboratory work is very essential in the field of sciences, even maybe chemical sciences, biological sciences, or maybe physics, definitely. So this is very critical for the country which actually trying to excel in the field of innovation. Innovation is the upcoming and very foundational stone for our growth, even for the framework of science and technology. And innovation is directly and indirectly interlinked with the startup. So even you can say, sir, we are doing basic sciences, we are having a student from these areas. So how we are related to this innovation and a startup culture? I think science background does not mean you can only excel or join or grow in your own area. You are also versatile. The moment you finish your master's, you may be equipped with the knowledge and experience and the skills. Even if you want to migrate from the fundamental research to the industry, or if you want to migrate from your fundamental research or from your normal education system to applied science. So this skill set is very critical and very essential. As we are talking today, yesterday India celebrated first National Space Day. It was very biggest proud for all of us. India as a nation, we made it on a one go. Chandrayaan 3 was successful. And you can imagine right now, a global superpower, even leading space nations like America, Russia, European Space Agency,
through their European Union and Japan, even China. All of them are very much, addressing their concern towards India. India is actually doing by actually investing very less money in compared to the developed nation. Low cost, but highly advanced and technologically very, very complex missions. And we have been even achieving the results. Why I'm bringing this, reference in this conversation, it is very critical. You might be familiar, or maybe or may not be. Recently, the international journal, very famous journal, and every one of us has always have a dream to publish a paper in Nature journal. And our Indian scientists, Chandrayaan-3's team, they published a paper in Nature journal that actually published and, got online across the globe. The paper is now talk of the town. It is having a central buzz where the findings of Chandrayaan-3 actually discussed how this rover Pragyan, which was a part of, Chandrayaan-3's lander, Vikram lander, and when it came out and it worked for the 14 days, 14 days means 14 Earth days. Okay, so the 14 Earth days, that was the one day of the moon. At the same time, Vikram lander was also having its own onboard payloads, scientific experiment. It was having alpha X-ray, particle spectroscope, so collecting data of the surface of the moon. In planetary science language, we call regolith. That is actually trying to understand the surface mineralogy, features, and properties through these two stationary lander and the rover. So they worked for 14 days continuously, and they generated a huge amount of data. But before that, for the world, we was one of the very few nations after America, Russia, China, that we successfully landed our own spacecraft, our own lander on the surface of the moon. And we were the first, no doubt. We were the first nation. We reached near the South Pole. And that South Pole is just like a, treasure for science, especially of planetary science and geology. Because the way we are going to explore, publish, and bring out and extract more information scientifically, that will actually add a value to the knowledge of planetary exploration, especially in case of moon's formation, its mineralogy, its seismology. So these important things are very critical. And geologically, we will be very much, advanced as far as our understanding is concerned about its formation theory. So in basic sciences, we may deal with chemistry, we may deal with the, physics. In planetary science, in space physics, or in space technology, all sort of subjects are coming in a single play. And we are very much concerned and very serious as a nation for interdisciplinary sciences growth. As far as space science and technology is concerned, you may see designing and driving, we need engineering skill set. But before that, for any spacecraft, for any satellite mission, we should have scientific objective. And those scientific objectives are being conceptualized by the scientists from various fields. Chemical composition may be very useful for chemical scientists to understand the chemistry of that particular region. Physicists are very much interested about the solar irradiation on the surface of the moon, geology of the moon, and its formation and magnetic field. At the same time, biological sciences are also leading. India is also gearing up, not very, very vast in the field we call astrobiology, but India is having a few experts, but globally this field is emerging, astrobiology, and we are trying to use the extra samples bringing by the spacecraft, or we are trying to study on other bodies. So while basic sciences is very crucial, I think all of you must have understood while you're pursuing your degrees, your postdocs, or maybe PhD programs, or might be teaching somewhere. Sir, I think it is critically important for a country like India, we call Bharat, we should be second to none in fundamental sciences, because that will redefine our growth and our place on a global map. Our positioning on a global map in the scenario when geopolitical situations are changing very rapidly, that is the reason science has to take front seat. And a current government of India, and also through scientific bodies and institutions, the primary aim is to take this national fervor
to the very core of our audience. Our audience means, in our cases, in your cases, those are the students, definitely upcoming generation. They are in universities, colleges, after passing schools. So thinking, analyzing, putting hypothesis, doing experimentation, and testifying their hypothesis, and then planning accordingly. So it highly matters how we are going to have the interplay between these, logical understanding. I think it is our moral and scientific both responsibilities to bring the subject before the table. In each and every classes, other than our syllabus, if we are able to correlate or relate the syllabus or syllabus-related subject with the surrounding development in the field, maybe physics, maybe chemistry, maybe biological sciences, or any part of biological sciences, botany, zoology, etc., even biotechnology. So these things are very critical, how we can correlate and use technological material using technologies. Now there is a time when we cannot rely only on basic traditional teaching methods. Since this is a refresher course, I think it is also my moral duty, because I'm from Science and Tech, Science Museum, Science Center fraternity, being a scientist, being a curator, what we are trying to portray, that we are trying to expose audience with the hands-on experience of science through exhibits, through various galleries, science galleries. Why we are bringing exhibits in the picture? Because exhibit allows you to, play with the exhibit, and you might be having multiple questions and answers, and you might be having hit and trial process. You will try something, you may not get in return, but you may try once again, and then you may get in return. In the process, you may be engaged yourself, and the process itself will be very, you're driving for your mindset and actually leading towards some understanding about the subject. And for science students, for any field, even geology, biology, chemistry, physics, and any field from the sciences, or maybe applied science, this experimental ability is very critical in this day. When technology is growing very fast, we are now living in the era where AI has already come, and it is actually affecting globally. So technology is not going to wipe out us if we are ready to adopt and coexist with the technology. As we are talking Atmanirbhar Bharat, and as my subject is also saying, I'll very quickly, touch upon the theme of the subject, which Atmanirbhar Bharat in space by 2047. It is a subset of the bigger picture of India, of Bharat, of Atmanirbhar Bharat by 2047. There is a goal. Goal is very critical and important for any country to achieve excellence, self-reliant attitude. But I'm trying to bring that in science centers, through galleries, through educational programs, activities, and in winter season, primarily in summer as well. We also organize, night sky observation through telescopes. So what we have observed, when students or general publics are visiting our science center, and in the evening after sunset, the moment they are seeing through the telescope, even the craters of the moon, they are very, very, moon is very, very own celestial bodies. Everybody believes it is our part of life. India is having a rich tradition, and as we all know, Indian civilizations dating back around 5,000 years old civilization. We believe India is 5,000 old civilization, using a references established by a scientific community that is the old civilization on this planet. Moon is always a critical, pivotal point in our history, in present time, and maybe in future. Planetary science is exploring from scientific perspective, but our month, our days are controlled by moon and sun. So astronomy is also very much in our life. Whatever month we are using, and the phases of moon, tithis, jo hum kehte hain, Krishna Paksh or Shukla Paksh, those are already controlled by the phases of the moon. So we are very, very much in scientific. We are always trying to use those things. Our, calendar also developed according to that, logical reasoning. I'm talking about
precisely about mathematical understanding, not the interpretation. Interpretation may lead without scientific basis to something which may not be explained by the scientific, processes. So that is the reason we have to connect the dot. So everything is very much with us. As you can see, I'm using this virtual background. It is not available on internet. I have just created using one of the AI tools, but after putting the information to the tool, please tell me if expanding cosmos with galaxies and creating, which we call churning, something is forming, churning. That churning process is a very critical part. How these galaxies are being formed, the very fundamental billion-dollar question across the globe. People are worried and concerned. Even NASA has launched a couple of years back. They have successfully received first signal also, James Webb Space Telescope at L2, Lagrangian 2 point. As far as physics is concerned, I can tell you the L2 means the distance between Earth and the point, that is the 1.5 million kilometer, 15 crore kilometer के आसपास है ये. And L1 is towards sun, L2 is just opposite side of the sun. Earth is in center. So our Aditya L1, the India's first solar observatory spacecraft, it is towards sun, and towards sun that means 15 crore kilometer. And sun is 150 crore kilometer far from us. Okay, so the 15 crore will not add the bigger value, but it will give a wider horizon to study very closely our own star. Our parent star, our star, for that we in our Indian civilization and other Greek, Roman, and various civilization cultures, we have been worshipping our sun. And you can imagine the worshipping is also related somehow with our scientific basis. May not be exactly in our rituals, but somehow we are trying to give respect to the nature, and nature is very critical for our growth. To scientific observation, we are forgetting we might be doing rituals, but our generation is not very much reconnecting with the scientific basis. So this Atmanirbhar concept is very much important in any areas of sciences and engineering. In basic sciences, we have bigger role and responsibilities because any nation can rule or drive its future based on fundamental understanding of the subject and creating new things. For an example, now we are very concerned about stopping import of semiconductor. That is biggest, wildest dream of anyone. You cannot cut down, because whole electronics industry and technology-driven economy cannot even imagine semiconductor chips. Those are being, produced by some few nations. Taiwan is one of them. China is having the very rare earth element. So as you can imagine, if India is not going to design and develop its own semiconductor in India as per the international standards, so then we will always rely upon those international, your suppliers. So that may affect. We have experienced this thing in COVID also. And when there is a geopolitical situation, we are always on terms. So fundamental sciences are really, really very important and very critical. Actually, that will add value to our dream. And the dream is bringing scientific fraternity on the table to actually take lead from the front. We might be working in isolation sometimes. We might be struggling in isolation, teaching and doing research at the same time. But you just imagine, sir, whoever is going to be a part of this program, a very beautiful program. I am very much thankful to the Chandok sir for bringing me this opportunity to be a part of this really very engaging session where I can be a part of this refresher course. Fundamental growth of any nation is highly, infectious. If we are in a positive sense, if it is very much driven by your consciousness, your passion and curiosity, definitely it will yield some results. Like in agriculture science, better crops, seeding, sowing, and then soil properties, and then watering and everything may lead to the good. Even these days, we can't imagine without pesticides. Can you imagine? So India is now one of the largest consumer of pesticides. We have been, using and there are only few companies in the world. If you go at the back end,
you will see there are only few companies, they are actually controlling this international market. So we are very much dependent on those chemical science driven companies, biological science driven companies. So we are not having our own old practices. We might be doing in a very small patches, but not on a scientific scale. So our Institute of Agriculture, the body like CSIR and PUSA, New Delhi, they are having a labs in India, various labs, they are also trying. So every one of us ultimately leading to one common point as a commoner, that is the fundamental understanding. And that can only benefit us if we are good and not good. We are best in the experiments. So whoever is a part of teaching culture, and please ensure your students, your faculties will also be a very much active part, or might be taking active role in practicals, in assignments, and also using technology. I want to tell you one thing. We cannot say AI is going to rule us. We can't say right now that AI will take jobs. Definitely, it is not going to take a job the way we have been projecting by few, few agendas. Those are driven by some, interest, maybe national or international. If we are able to cope up with AI as a technology enabler, and we can cope up and use for judicial purpose and for our growth, then definitely new areas can also come up, because artificial intelligence always believe on the data. Whatever data we have been generating and training it, accordingly, it will give us a framework. So the way we talk about Indian space program journey, ISRO had a launch on 21st November 1963, Nike Apache rocket. For your kind information, I want to bring before all of you, Nike Apache was given by the American space program to India. And the knowledge and the expertise was shared by the Russian space program. In those times, when India was good friend of both countries, like the way currently is also, India is having a new dimension with both the countries, but charismatic leadership of Dr. Vikram Sarabhai made it possible. We launched from Thumba, and then rest is history. That was the given rocket by the Americans. Then we started developing Rohini sounding rocket series. In 1975, India launched its first satellite, Aryabhatta. Then, and so on. And we used another rocket because we were not having any powerful rocket at the time. So we used international support. And in 1980s, we had our own rocket, which we call SLV-3. But that had a starting failure. Dr. Kalam was the head of the project, and he never looked back. Again, Satish Dhawan, one of the greatest scientists of our country, our soil, the faculty scientist from Indian Institute of Science of Bangalore. He was also the chairman of ISRO. And he said, Kalam, please go ahead. I'll manage the fund. He managed the fund 200 crore in 1980 or 1981. Can you imagine? In a couple of years or less than a 2-year time, ISRO launched another rocket under the great leadership of Dr. Kalam as a project scientist. And all of you might be knowing very much, and we had very golden opportunity. Dr. Kalam also visited in our Rajendra Gavati's university's, one program. I'm forgetting the exact name. I think it's a big program when he was, I think, president, or maybe just, he was the president of India. So it is a very great coincidence that he led the project. It became successful, and then ISRO's rocket launch, we call launch vehicle in the field of space technology. Rocket is a rocket, fundamentally. It is a rocket. Launch vehicle means you have a vehicle by putting your satellite or payload on top of it, you can launch as per your scientific objective. Then ASLV, Augmented Satellite Launch Vehicle. Very quickly, I'll come to the PSLV. ASLV was not that much successful. It was just a brief period, but advanced understanding, it built upon the knowledge and experience and expertise of SLV-3. And then India was having one of the successful rocket in the history, which we call PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. It was having a capacity, it is still having a capacity up to 2,000 kilogram satellite,
But since then, it has been launching many satellites, even because of on the PSLV already, I think achieved 104 satellite, international, milestone. Later on, America's SpaceX company broke the record. So you can imagine that rocket was not designed to carry Chandrayaan 2 or 3, but the rocket made history. It is the only rocket which started successfully and allow India to position itself globally on a scale where Americans and Russians or even Chinese are respecting. And we launched Chandrayaan 1 through that rocket with a special variant of the rocket. As per your requirement, you make changes on the stages so that lift can be generated, and wherever you want to launch a nearby planet, or maybe in case of our moon. So PSLV was used for Chandrayaan 1 and then Mangalyaan. Why I'm referring these two things? Because PSLV got this opportunity to bring a new dimension to Indian space program. That is the reason, because we left Earth first time through Chandrayaan 1. We earlier, whatever we were launching in the near Earth orbit or maybe in the geostationary orbit of the Earth. And then GSLV program came into being, Geosynchronous Launch Vehicle. Most powerful rocket. Now we have GSLV Mark III, the advanced version of GSLV series. So GSLV Mark III was used for Chandrayaan 2. Successfully we reached in the orbit. Successfully we detached Chandrayaan 2's lander. But it's a science and engineering. Millions and billions of processing components, lots of programming, processing, hardware. Chandrayaan 2 got a glitch. Chandrayaan 2's Vikram lander was supposed to land near the South Pole, but just above 2.1 kilometer, it failed. So people thought, and most of us also believe, we had a failure mission, Chandrayaan 2. But we all are science people here, and I'm very happy I got this opportunity to discuss and express my views before this August gathering. The Chandrayaan 2 was not failure. For a commoner, for armed people, general public, we call failure, but it was successful failure. In a space field, it is called successful failure globally. NASA has coined this sentence because in Apollo 13 mission, they supposed to land their Apollo 13 astronauts on the surface of moon. I'm talking in between 71, 72 year journeys. NASA had a 6 Apollo series mission. Apollo 11, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, they did it successfully in 1969, 20th July. Then Apollo 12, successful mission. Apollo 13 was the challenging mission because it went in the orbit of the moon, but it developed while coursing towards the moon, navigating around the moon, a serious problem. It was not ready to land, and there was a threat of oxygen supply and life supporting system when astronaut can die. And there was no such plan. This whole spacecraft can be bring back without landing. But NASA, people say around, it's a complete team of NASA when they were working on Apollo series missions, around 4 lakh people, including every damn people involved in that research, engineers, supporting staff, assistant staff. And NASA's engineers decided the way they are struggling, and they are bringing a solution for Sunita Williams. You might be knowing Sunita Williams in space. She is in space already on board International Space Station, and they are trying to bring her back with her colleague, Butch Wilmore, but they are not able to decide at the moment because of that some challenging. They are bringing new possibilities. So Chandrayaan 3, Apollo 13, I'm connecting because Apollo 13 mission just went around the moon. It came back and successfully they landed their astronauts on the planet Earth. They saved astronauts. So they call successful failure. And that successful failure became buzzword in the whole field of space science and technology. So Chandrayaan 2 was the successful failure because Chandrayaan 2's orbiter, the main orbiter, which is still orbiting around the moon and generating scientific data and helping, our journey of lunar exploration. And this Chandrayaan 2's orbiter actually helped Chandrayaan 3 while landing also. It was helping us for relaying the signal. Even Chandrayaan 2's cameras, high resolution cameras, actually the generated images was used in Vikram lander. So that mapping of Chandrayaan 3
lander may be very, very authentic and with high accuracy. So there were two missions which was used by the Chandrayaan-3 lander. One is the India Chandrayaan-2 orbiter, and the other one is the very powerful camera launched by American space program NASA, LRO mission, Lunar Reconnaissance Orbiter. It generated very, very high resolution mapping of the moon. So these two data sets were used by the Vikram lander, and new changes. Definitely, we got new learnings from Chandrayaan-2, and we made changes in the lander, and this successfully, the rest is history. You all know very much. Chandrayaan-3 landed in the evening time, and we successfully landed at the same point where we supposed to land. Even we were not having any distraction as far as precise landing is concerned, latitude and longitudes are concerned. This was the scale of accuracy. Even Chandrayaan-3's Vikram lander used ALS, automatic landing sequence mechanism, where AI was used in that programming and designing process, so it can land successfully without any problem with autonomous decisions. So this was done by India's homegrown scientific community, ISRO. Fundamental scientists, they design the scientific experiments, and scientists are very important. Ultimately, they design experiments. They ask we need to observe these areas, these things. Accordingly, engineers and applied science people design hardware, and we use the data. So it's a very big interplay and very great connections. And that was the day when India became the fourth country by doing so, and also the first country reaching towards the South Pole. And I'm very happy. I think at the end, I'll take a few questions from all of you. If you are very much, interested in the field of space technology, maybe in planetary exploration about the Chandrayaan-3 or any related missions. So it is now a prestigious occasion for India when we are leading and gearing up for upcoming space missions like Gaganyaan, human spaceflight program. That is when India's own astronaut on board the Gaganyaan will go in the lower Earth orbit of Earth, and they will be brought back by the ISRO successfully. This is a maximum lifespan of the mission is around a week. Then we are going to launch definitely Venus mission, and ISRO is already having a tie-up with America and European Russian ISS, International Space Station. So you might be knowing that Mr. Shukla, Air Force pilot, is being selected for sending to the ISS from India, International Space Station, very soon. And India has also announced to bring its own space station by 2035. So there are many, many missions. Whatever data we have been collecting, with the data may be very much used by the students of MSc and BSc. Now, ISRO's National Remote Sensing Center, NRSA agency in Hyderabad, is very important institution. Whatever data they have been collecting and putting, they are also putting in their database on the server. And with little bit registration process and approaching to the Hyderabad NASA ISRO's institutions, student can also avail the data of our own earlier satellite missions like AstroSat. AstroSat is still functioning, the first astronomical satellite. Aditya L1 is exploring. Our son, Chandrayaan-3 has already done it. People are doing research based on the data, and we just discussed earlier new findings. And I'm very happy to say that at the end, I don't know my closing timing. I think I have only 10 minutes left. Can someone tell me what is the duration of my talk? साकेत जी अभी 10 मिनट अपन और डिस्कशन कर सकते हैं. So sir, I'll be very happy with your kind permission. Can we open this discussion for the discourse and interaction? Yeah, definitely, no problem. Yeah, so I'll be very happy if all of you, whoever is listening right now or interacting, around 56 active participant in the Zoom call. I'm opening, except me, there are 55, except Chandok sir, there are 54. Let us open this table for the discussion. Thank you very much. I'll highly appreciate if someone can, coordinate this questioning, or maybe anybody can raise
or unmute mic and ask question. Because I want to build last 10 minutes organically based on the questioning. Then self-reliant can be explained well with formally framework of space science and technology. Thank you. Everybody is saying nice information, but information cannot be only useful until unless it may be in execution. And the era of digital technology, we are having infodemic. The way we had pandemic, so now information is overloaded to all of us through digital internet connectivity, and a mountainous data is available for consumption. How to consume, what to consume is a big challenge for all of us. And students are in really big puzzle. Earlier, we had a challenge reaching bookstores, reaching stores for reading library books. Now, most of the things are on our fingertips. But how to utilize, how to refer those things for our research studies are now very important. So anybody can ask question or ask any topic. We will have a discussion. Okay. People are saying because host has not given permission, that is why they are unable to unmute their mic. So I will humbly request to the host, please allow participants to unmute their mic. Hello. Otherwise, I'll be feeling like a one-way communication. Earlier, it used to be when the lunar Apollo mission, you must be knowing that when Neil Armstrong said, this is a small step for a man, but this is a giant leap for mankind. The very famous line, the moment he just, landed the first step on the moon. That was biggest statement ever. Even I can say, as a humanity, you are reaching to other celestial body. It is a bigger leap for humanity. First time any human being landed on your nearby celestial body. As we call 5,000 years old civilization in India. It's a known scientific backing based data. So, but reaching to moon took how many years? Only after 1950. In last 75 years, we are exponentially growing very fast as a human species. From anthropology point of view, from psychological point of view, the way our growth trajectory is coming up, and now AI has come into play, that actually is going to be speed up. So this journey has to be monitored, controlled by the control variables so that we can reach growth of any nation or as a whole humanity, as a world, for peaceful use of outer space, even peaceful use of our planet Earth's resources. Hello. Can I come in? Yes, sir. Please go ahead. This is Dr. Niyaz. Sir. Yeah, Dr. Niyazi, boliye. Thank you very much, sir. This is very elaborative and informative lecture on astrophysics and physics-related concepts. So I'm very highly thankful. I have one query regarding this. As of now, can we rule out if there are in space, there are other planets? Is there possibility the life couldn't exist in those planets? Definitely. A very important question. I think that is the one driving force for the humanity since the ages. We as a human civilization must be, thinking, analyzing. And there are many anecdotes and, references, even in the different tribes, oldest cultures, and their lokoktiyan, their rock art culture, and about the cosmological understanding in their own method, on their own ways. So always as a human trait of curiosity, we believe existence of life on planet Earth. As of now, we know we are very much progressing. We are ruling. We are in very big dilemma and illusion that we are one of the smartest. We are the smartest species.
but actually we are not. If we are a smarter species, then why we are putting garbage in the sea, on the land, and now in the space also? But possibility of life is really very much open. And as far as life elsewhere is concerned in the cosmic scale, people are seriously exploring possibility of one of the moons of the Jupiter, which we call Europa, and Saturn's moon, our beautiful Saturn moon. I don't know why we are worried about Saturn. And as far as non-scientific, connection, Saturn is very beautiful planet in the solar system. And luckily today we are having Saturday. So it's a very, very, soothing connection with the Saturn. Saturn's own moon, one of the moons, Titan. The name definitely came from the Greek civilizations because they were the earlier thinkers. Yes, and, so the Titan, Europa, definitely Mars is very much our approach. So these are the few possible, very accessible. In future, we will be having many, many missions. We, collectively as a human species, I am saying on behalf of the very advanced nations, the way NASA has explored Mars, India is exploring through Mangalyaan in the orbit, and definitely NASA's one of the advanced rover, Perseverance, that is already rovering on moving on the surface of the Mars in the Jezero crater. If you can Google, you will find out the Jezero crater is very, very important because of earlier it was believed that it was having a liquid ocean, huge liquid ocean, and deltas are there, Mohana, sand dunes like our planet Earth. So Mars was having liquid ocean, no doubt. But what happened to the Mars and why the atmosphere is very feeble in comparison to density, the way our Earth is having holding particles, we are exploring possibility. Life may exist in the possibility of life, not only in the surface. People are expecting astrobiologists. They are coming into picture. This is the basic science courses. Some may be from biological sciences, not only on the surface or below the surface, any form of life. People are also hypothetically putting their theories based on the evidence or scenarios, constructing an idea in the atmosphere of a planet. So that is very peculiar, but very scientifically possible, plausible reasoning. And you can tell me one thing: if our galaxy is having around 2 billion stars, it is an approximation. Maths comes into play, basic sciences we are talking all about. Approximation that definitely is going to play a critical role. It is based on our understanding. The way we have grown up and we have studied our cosmic neighborhood using ground-based telescopes, powerful telescopes from space. Now we have a good understanding from the cosmic scale. Our galaxy is having around 200 billion stars, and that number is increasing based on our exploration. Actual number is not known to us. This is as of now, the common mutual understanding between the cosmic scale and as a human curiosity with scientific basis. Okay, and we also believe more than 100 billion galaxies in our known visible universe. I say known visible universe, then there are challenges. 4% of matter, 4% in 100%, only 4% of universe is in visible range. The way we have progressed, we are unable to understand some problems from the days of Edwin Hubble. Edwin Hubble discovered that rate of expansion of our universe, that galaxies are moving far apart from each other. So that was a very challenging situation. Even Einstein recorrected himself. He put the one blunder we call Einstein's biggest blunder because of this constant. Einstein thought it is not necessary, but later on it was added on. So Einstein thought it was his biggest blunder in his entire career because of the scientific observation of Edwin Hubble. And then now we are very much in puzzle. Since all of you are very curiously listening at this end of talk, I want to tell you dark energy and dark matter, these two big areas are totally unexplored. And they have direct or indirect, correlations with our visible universe, visible matter. I say visible universe means the matter which interact with the light and we can see or we can touch.
or we can experience through our scientific experiments. But beyond this 4%, 96% is unknown. The larger part is dark energy. Is it actually 4% or it could be less than 4%? As of now, your approximation-based theoretical cosmological understanding is we call 4% because dark energy is more than 70% dark matter, and there are some challenges because when we study supernova, when we study black holes, and when we study highly variable, very high gravitationally very powerful stars like a pulsar. Pulsar is a star which actually emits the lights like any lighthouse, and it actually rotates. So its rotation can be calculated based on its light beam. If it is coming towards you and going and coming back, you can calculate the time interval, and that time interval can tell you its rotation. And they are actually magnetrons, means highly magnetic field based stars in their stage. So there are many things in astrophysics, sir, but very precisely I'll tell you I'll try to answer with our limited understanding. Thank you. Can I put one more? Yes, I'll also add very quickly, because you have raised very serious thing, very important for whoever is listening, not only within this August gathering. I think this program is also being live streamed on your YouTube platforms. So around 5,000 planets beyond our solar system, they have been discovered by now through various scientific exploration telescopes. Those planets are actually revolving around their parent stars, and we, as we call extrasolar planet, exoplanets. So the astronomers and astrophysicists trying to understand what are the proper situation for possibility of life. We call Goldilocks zone. Earth is at very particular location from the sun. It is not nearer the sun, not very far from the sun. And that makes us Goldilocks zone, means where life can harbor. We can adopt the temperature to the highest extreme temperature scenarios. And you can see northern and southern pole. We are also trying to exploring those things. So we are living on this planet, and we have wider temperature gradient on planet Earth. So we have good understanding about this data. So based on that, we are actually exploring Earth-like planet. So far, we haven't found, but Jupiter-like planets have been found. And around 5,000 planets have been confirmed. Beyond 5,000, there are many, scientific data has, generating data using telescopes. But confirmed means after the data analysis, confirmed actually it is a star. It is a planet of that particular star. And that is very important journey. We haven't reached beyond moon. Maybe for Mars, we may take another 10, 15 years. And a person like Elon Musk, who is actually pushing boundaries, the person like Elon Musk can bring a new dimension to the exploration of human life. We may reach before I think in my lifetime, in our lifetime, to Mars, not as a whole bunch of people, maybe earlier thinkers, earlier scientists, astronauts. But can you imagine this 5,000 years old civilization only took or lifted off in just post 1950? We as a smart or smartest so-called in illusion, we are believing that we are actually going to lead, and now still reaching to the star, which is very near to us, takes longer time, Proxima Centauri. In science fiction, I always get inspiration from science fiction films, science fiction books, and public talks and articles like from the Arthur C. Clarke, Jules Verne, H.G. Wells, Carl Sagan, many people. And in India, we have our own Indian great admiring scientist, Dr. J.V. Narlikar, earlier Professor Yashpal. So these are the things I think I will conclude to your questions answer, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Sir, namaskar, sir. 1 minute. Sir, I am at your disposal. If Chandok sir says it is a time up, then it's up. So if he says, please continue. So I'm very much comfortable. Yes, sir. Go ahead. Alok, sir. Sir, according to Big Bang theory, कुछ समय के पश्चात मतलब मिलियन बिलियन ईयर अगो अर्थ का डिस्टेंस सन से बढ़ जाएगा सर, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सोलर प्लैनेट जब बना तो निश्चित ही डिस्टेंस बढ़ता गया, तो एक समय के बाद डिस्टेंस और बढ़ने से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सर
आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा अर्थ लाइफलेस हो जाएगा कि नहीं? सर आपने ही आपके क्वेश्चन में जवाब दे दिया है। जो सिनेरियो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियोज, बट उस आपने जो स्केल जो लिया है टाइम का, बड़ी थोड़ी सी उसमें चिंता का विषय है, क्योंकि सन अपनी जीवन के मध्य में है, बड़ा अब प्रौढ़ नहीं रहा, ये मध्य जीवन में है, 5 अरब वर्ष हो चुके हैं। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटिंग डेटा के बेसिस पे कहता है कि हमारा सन अगले 5 वर्ष के बाद मर जाएगा, यानी व्हेन इट विल डाई इट विल बी स्वेलिंग लाइक अ रेड जायंट स्टार। तारे कैसे मरते हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर, उस स्केल पे समझिएगा। अगर सन है, सन जब जब फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, तो प्लैनेट अर्थ को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। तो आपकी जो थ्योरी कहती है कि अर्थ हमारी दूर जाएगी, वो सन के पहले वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एट दैट स्केल। डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आवर क्लाइमेट। सन का रेड जायंट फेस आएगा वन डे, ये आउटर सेल जो है सन की, उसके अंदर तक हम पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली हम मतलब हम तो नहीं रहने वाले सर, जो जनरेशन तो दूसरी गैलेक्सीज में चली जाना चाहिए, जब तक हमारी गैलेक्सी में दूसरे स्टार्स पर रहने लगना चाहिए, जब तक तब तक हमारे पास टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजें आ जाना चाहिए, तब तक हम कहीं से भी डिसमेंटल होके कहीं भी असेंबल होने लगे ना। उसके लिए हमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, एआई, quantum computing, I haven't touched topic in this discussion. Quantum computing is very emerging area. बहुत सारी चीजें लगने वाली हैं, इसलिए जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनको करिए इंस्पायर सर, बिकॉज नाउ स्पेस सेक्टर फंडामेंटल रिसर्च का टाइम भारत में बहुत अच्छा है, इतने सारे संस्थान आ रहे हैं। बट बात एक ही है, हम सवाल थोड़ा सा शायद सर घुमा के पूछने की जरूरत है। हम बोलते हैं सर मैं तुषार बोल रहा हूँ। कल के न्यूज में, बीबीसी न्यूज में एक न्यूज आई थी कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स जो है यूएस के, उन्होंने जो गैलेक्सी है अपनी, उसमें से एक तारे को बाहर निकलते हुए आइडेंटिफाई किया। ओके, एक्चुअली स्टार्स दे डोंट लीव द गैलेक्सी, स्टार्स कभी गैलेक्सी को छोड़ते नहीं। दिस इज फर्स्ट टाइम दे हैव मेंशन दैट द स्टार इज लिविंग द गैलेक्सी। तो ऐसे डिस्कवरी एमेच्योर जो है वो यूएस में कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपना इसरो अपने यहाँ पे एमेच्योर्स के लिए कुछ नहीं लेके आता है क्या? या वैसा कल्चर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं? सर आप महाराष्ट्र के किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? सर मैं सोलापुर से हूँ, बाबूराव पाटिल कॉलेज। सोलापुर में हमारी नेहरू साइंस सेंटर ने एक साइंस सेंटर बनाया है आपका? हाँ सर, सुना। सोलापुर साइंस सेंटर, वेरी गुड सर। अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, आपने वर्ड यूज कर लिया अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब ही है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फेडरल इंस्टीट्यूशन, फेडरल फंडेड इंस्टीट्यूशन। अमेच्योर यानी आपकी इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी पे, आपके पास एक टेलीस्कोप है, आपके पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आपको इंटरेस्ट है, पैशन है, यू जस्ट गो इन द नाइट एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग, एंड यू मे हैव समथिंग इन योर माइंडसेट कि हम तारों के वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं। तो अमेच्योर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इतना बड़े ग्रुप हैं कि कोई आप और हम भी, कोई भी बच्चा जो एमएससी बीएससी कर रहा है, इवन ना भी कर रहा हो, और अगर उसके मन में पैशन है, तो वो टेलीस्कोप अगर ले और थोड़ी समझ उसकी बढ़े टेलीस्कोप के रूल, जैसे हमारी समझ फोन के मामले में इतनी बढ़ गई है, जो कि किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, और हम फोन की फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछ लीजिए उनसे, जो हमारे लिए इनेबलर होना चाहिए टेक्नोलॉजी। आई थिंक इट इज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम को पता नहीं कैसे डायलेशन के मोड में लाता है ये मोबाइल फोन। तो वो आइंस्टाइन का मैटर है, कभी और बात करेंगे कि हम उसमें लग जाते हैं। तो आप जो कह रहे हैं सर वो बहुत संभव है, और ऐसा नहीं है कि तारे नहीं छोड़ते हैं। देखिए उनको वंडरर्स कहा जाता है, इसलिए गैलेक्सी का ये अभी तक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डेटा अभी कलेक्ट हुआ है। हबल टेलीस्कोप जो आपने सुना होगा, बहुत एडवांस टेलीस्कोप था, वो उसके अंतिम क्षण में है, वैसे जीवन जी चुका है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा है उसको रिप्लेस करके। और आप ध्यान दीजिएगा, नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है वो इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करता है। अब इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करता है, तो थोड़ा सा मैं केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के फैकल्टीज से मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा आपके लिए इंफ्रारेड लाइट तो आपके लिए भी बहुत काम की है। केमिकल साइंटिस्ट भी मना नहीं कर सकते, उनको भी थर्मल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। बट मैं ये बोलूंगा कि जो इंफ्रारेड लाइट है वो रेडर लॉन्गर वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं। तो जो सिग्नल शिफ्ट, रेड शिफ्ट की हम बात करते हैं, जब उसको मेजर करना है कॉस्मिक स्केल पे, तो लाइट जो चली या ऊपर की रेंज में, वो धीरे 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 एक्सपैंड होते हुए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी खिंचते हुए विजिबल और इंफ्रारेड रेंज में आ जाती है। तो हम उससे उस सोर्स की डिस्टेंस का और सोर्स के साथ क्या रेडियल स्पीड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो तारे जो हैं गैलेक्सी में किसके लिए कारण घूम पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, एक तो इंटरप्ले ऑफ दोज स्टार्स बट मेनली दी स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी, और जो कि आता है सेंटर ऑफ गैलेक्सी से। और अभी जो ताजा एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल्स की जो फाइंडिंग्स हैं, और एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक कम्युनिटी बिलीव करने लगी है कि गैलेक्सीज के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं बांधने के लिए। और हमारी गैलेक्सी में सजिटेरियस ए स्टार नाम का एक ब्लैक होल है, एक नहीं मतलब सुपर बिलियन 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 टाइम सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कहीं ना कहीं हमारी गैलेक्सी के इस स्ट्रक्चर को सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, जो बाकी गैलेक्सीज में भी मिल रहा है। तो जो छोर पे हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। अब पता नहीं क्यों मैं इस बात को यहां कह रहा हूं, पर मैंने देखा है हमारे गांव देहातों में जो दादी और नानियां स्ट्रक्चर दीवार पे बनाती थी, जब मिट्टी के घर होते थे तो हम स्पाइरल बनाते हैं चीजों को, कुछ चित्र कुछ ऐसे चिन्ह होते थे जिसे मिट्टी से बनाया जाता था शुभ संदेश के लिए, जो तो स्पाइरल, तो पता नहीं ये स्पाइरल नेचर हमारी कल्चर में कहां से हमारी समझ में इतने सालों पहले से है, जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। तो हमारी गैलेक्सी भी स्पाइरल नेचर है, जिसके छोर का तारा उसकी रोटेशनल वेलोसिटी के कार्य के कारण तारा अपनी गैलेक्सी से दूर हो सकता है। वो दूर होते हुए छोटे स्केल पे लगता है, बड़ी पिक्चर में आप दूर से जाके देखोगे तो वो गैलेक्सी के आसपास ही घूम रहा होगा, लेकिन अपनी जगह से वो हट गया होगा। तो ये बिल्कुल संभव है। और अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए तो मैं बोलता हूँ बीएससी एमएस के बच्चों के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। अगर टेलीस्कोप ले लें या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में खरीदवा लें, एक छोटा सेंसस ले लें, रात को एक आध फेमस स्टार पकड़ लें। वेरिएबल स्टार्स के लिए पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो स्टार की वेरिएबिलिटी, उसकी लोकेशन, उसकी राइजिंग एंड सेटिंग टाइम बताता है। और उनको अगर अध्ययन करें तो तारों के तापमान का अध्ययन उनके रंग से लगाया जा सकता है। तो रंग और तापमान का रिलेशन तो गजब का है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये सर विषय सर और एक क्वेश्चन था सर, हम ऐसा सुना है कि हमारे सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, so in future it is said that के Andromeda and the Milky Way are going to collide with each other. So is it true or false? I'm a बिल्कुल student of बिल्कुल life science. साइंटिफिकली सर, ये कोई अंग्रेजी या कोई प्रश्न पत्र का सवाल नहीं है। 100% साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, सुपर कंप्यूटर मॉडल से बार बार ट्राई करके देखा जा चुका है। बल्कि अब तो ये ट्राई किया जा रहा है कि जब दोनों का कोलिजन होगा तो जो फॉर्म होंगे गैलेक्सी, जो फिर फाइनली गैलेक्सी अपना रूप लेगी, वो कितना कमाल का शेप होगा। और बहुत से लोग डरते हैं कि ये होगा, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो टाइम स्केल उसके लिए है, उसके लिए तो हमारे प्लेनेट ही हमारा सोलर सिस्टम की लाइफ ही जीवित नहीं रह पाएगी। तो हम आने वाली जनरेशन हमारी गैलेक्सीज में किन स्टार्स पे रह रही होंगी, मतलब आप बताइए। मुझे थोड़ा आर्थर सी क्लार्क जैसा महसूस करा रहे हैं, जाने माने हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट भी बहुत रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस के साथ वो एक बार डिबेट कर रहे थे, मैं आपको जिक्र करता हूँ बड़ा क्विकली। स्टीफन हॉकिंस जाने माने, आप जानते हो उनको, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतने बड़े, इतने फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद ब्रेन का कमाल इस्तेमाल किया ऐसे साइंटिस्ट। और कार्ल सेगन और आर्थर सी क्लार्क, ये एक बार डिबेट डिस्कशन में थे, तो ये बात जब छिड़ गई तो ये कहा गया कि तब तक जीवन दूसरे तारों के इर्द गिर्द भी रहने लगेगा। और ये पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करने पे आती है कि एक तारा दूसरे तारे से टकराएगा या कोलिजन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल अभी 1 से 1 बिलियंथ में है कि नहीं टकराएगा। इसका मतलब क्या होता है, गणित तक भी जो है एस्ट्रोनॉमर्स कभी मना नहीं करते हैं। वो डेसिमल के बाद एक इतनी अच्छी चीज है डेसिमल सिस्टम, कि उसकी पॉसिबिलिटी को इतने दूर ले जाके लगा देते हैं। आम आदमी तो ये पूछेगा भैया बताओ होगी कि नहीं होगी टक्कर, तो साफ शब्दों में नहीं होगी। तारे आपस में नहीं टकराएंगे, पर नया जन्म होगा। और उसके शेप के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो बनेगा कैसे गैलेक्सी, और 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल टकराएंगे तो क्या अद्भुत ग्रेविटेशनल वेव्स उससे रिलीज होंगी, जिसके कारण 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला। आपने अगर सुना होगा कि पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेशनल डिस्कवरी हुई है, और वो सोर्स ही पता लगाया गया कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए हमारी गैलेक्सी में। तो ऐसे मैसिव सुपर स्टार जब मरते हैं, तब जब वो अगर रिपल पैदा कर देते हैं, जब गैलेक्सी अगर टकराएंगी, तो वो तो कमाल का ऑब्जर्वेशन होगा। पर संयोग यह है कि मैं और आप दोनों सर भूतकाल के उस अतीत में होंगे, शायद सभ्यताओं को पता भी नहीं होगा कि हम कैसे थे। नहीं सर, एक मुझे स्कूल लाइफ का इंसिडेंट याद है। जैसे गुरु ग्रह पे, जुपिटर पे शूमाकर लेवी का कोलिजन हुआ था। हाँ, कॉमेट कॉमेट कोलिजन हुआ था, जी तो वो बिल्कुल। एक घटना याद है।
96। कोलिजन। तो आप हाँ 96 में 96। किस क्लास में थे? 96 में सर आई वाज इन 9th 8th और 7th में था। तो देखिए शूमेकर अपना काम कर गया ना, आपने उसका ऑब्जर्वेशन हाँ किया, और आज किस विषय को आप पढ़ा रहे हैं? अभी मैं बॉटनी को पढ़ा रहा हूँ सर। आई एम। देखिए, तो यही तो इम्पैक्ट होता है एक साइंटिफिक इवेंट का। आप साइंस की स्ट्रीम में हैं। शूमेकर लेवी जो है हाँ हाँ वो है कमाल सर। का एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में। मुझे वो एक पिक्चर भी याद है, नासा के वो साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे थे, पुराने जमाने के बड़े डिब्बे वाले सफेद कंप्यूटर थे, उस पे जो यस। पहली इमेज आई, जो उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन में उस इमेज को जब कैप्चर किया, तो पूरी का पूरा हॉल गूंज उठा। पूरी दुनिया के लिए कमाल की बात थी कि वो कमाल ग्रेविटी की के बात फोर्स के कारण वो टूट गया था। छोटे छोटे टुकड़े एक के पीछे आके कोलाइड होते जा रहे थे उसके कोलाइड एटमॉस्फेयर होते में। थे। और आपको इतना और बता दूं, आपकी क्यूरियोसिटी के कारण, हम्म। जुपिटर प्लैनेट सॉलिड नहीं है, ये हाँ गैसियस इट्स अ है, गैसियस, इट्स अ इट इज गैसियस अ प्लैनेट। फेल्ड स्टार। ये किन्हीं कारणों से इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे दो तारे नहीं हैं, वरना दो तारे होते हमारे सोलर सिस्टम में। अगर सर 2 तारे होते तो इज लाइफ एग्जिस्टेड ऑन प्लैनेट अर्थ? सर पॉसिबल सिनेरियो, बहुत फेमस स्टार वॉर्स की सीरीज है, हॉलीवुड की एक बहुत लंबी फिल्म सीरीज 60s के दौर से हाँ चलती आई है, उसमें हाँ, नहीं वो ऐसा तो देखिए ऐसी लाइव सर। बताई है कि दो तारे हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टू स्टार्स डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर ग्रेडियंट। हम कैसे होते, क्या होता, और हम पैदा भी कैसे हुए, ये भी तो अभी सर साइंटिफिकली बड़ा डिबेटेबल चैलेंज है कि हम एक सिंगल सेल स्पीसीज से, चीजों से कैसे बने हैं, हमारी जर्नी कैसे हुई है। हम मिथ में गलत बोल देते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं, साइंटिफिकली इनएक्यूरेट। क्या हमारे और बंदर यानी चिंपांजीज के सबके कॉमन इंसेस्टर्स है जो अभी भी अननोन है? बायोलॉजी के यस यस। टीचर्स हैं ना आप लोग बहुत से यहाँ, हाँ तो हाँ सर, प्लीज हाँ सर। इंस्पायर करिए कि वो डीएनए और जीन सीक्वेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करके हम बेहतर समझ पाए कि हमारा एक्चुअल दोनों के परिवारों का, दोनों प्रजातियों का, कि कॉमन इंसेस्टर कौन था। और आपको एक चीज और बताएं, यस सर। मतलब लाइटर नोट पे सर, मुझे लगता है ये टाइम लिमिट चंडोक सर कहेंगे इट्स बियॉन्ड टाइम, बट चिंपांजी और हमारे डीएनए में लगभग 1 से 1.5% का डिफरेंस है। तो आप देखिए, हम 1 से 1.5% डीएनए डिफरेंस होने के कारण, जो मतलब जीन्स की बात भी अगर हम करें पर्सपेक्टिव में, तो आप सोचिए हम इतने स्मार्टेस्ट हैं, जो हम चिंपांजी के सामने तो हम कितने स्मार्टेस्ट हैं। स्मार्टर मानते कि नहीं हम अपने आप को? और हाँ सर हमसे कोई मानते। 1-1.5% स्पीसीज एडवांस मिल गया हमको कहीं, जिसे हम एलियन की तराजू से तौल रहे हैं आज, उसके सही लिए हम बात। चिंपांजी होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स होंगे, तो बस डेफिनेटली। यही होप है हमारी साइंस एक्सप्लोरेशन की। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Sir, I have one question, sir. सर प्लीज आप मॉडरेटर से पूछ लें अनुमति, सर नहीं Sir, तो मुझे बस सर एक simple सा question है sir. Can India बिल्कुल help in अनुमति अनुमति giving है सर, अनुमति है, sir? बिल्कुल आप ले सकते हैं बात, अगर आपके पास टाइम है तो कोई जी प्रॉब्लम बिल्कुल सर, साइंस के लिए तो समय सर क्या है, बहुत सीमित है इस प्लानिट पे। नहीं। 2 क्लास आपके नाम से अलॉट कर देना। नहीं नहीं सर आप भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है सर, थैंक यू। प्लीज पूछिए सर, कौन पूछ रहा है? Sir, can our दो ले country लीजिए help आप। in bringing NASA Sunita Williams back to Earth, sir? चलिए, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं पहले मुझे ये बताइए। Physics पढ़ा था sir. मुझे लग ही रहा था, पर मैंने कहा ये इंटरडिसिप्लिनरी की बेसिक साइंसेस स्ट्रीम्स हैं, तो पूछ लें, क्योंकि जिज्ञासा ना किसी विषय या डिग्री का मोहताज नहीं होती है। तो और वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रेस करने के लिए। तो मैं आपको लिए बताऊं कि आप मुझे बताइए क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज, हम भूल जाइए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन टेक्नोलॉजी, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं थॉट को, एंड देन वी विल रीच टू द कंक्लूजन, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू टू बिल्ड एक्चुअल सिनेरियो। 3 सिनेरियोज हैं जिन पे अभी पॉसिबिलिटी के साथ सोचा जा रहा है। आप बताइए, अब वो जिस चीज से गई हैं उसका नाम जानते हो आप? स्टारलाइनर। स्टारलाइनर। हाँ बोइंग उनका बहुत बड़ा ठेकेदार है, नासा का कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ yes sir. वो बहुत सालों से अपोलो के दौरान से उनकी हेल्प कर रहा है। अभी उस नासा ने कहा कि ये छोटे छोटे कामों के लिए अब वो खुद नहीं करेगा, स्पेस सेक्टर को और बड़ा करेगा, इंडस्ट्रीज को जॉब बढ़ाने के लिए और आगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जब तक कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होगा स्पेस सेक्टर का, तब तक ग्रोथ Yes sir. एक्सपोनेंशियल नहीं होगी। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल साइंस गवर्नमेंट फंडिंग से बस चलेगी। तो उनने Yes, भैया स्पेस एक्स को बोला, स्पेस एक्स ने ड्रैगन क्रू बनाया, सक्सेसफुली चल रहा है, एस्ट्रोनॉट ले जाता है लाता है ना, वो प्राइवेट स्पेस प्लेयर है अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में। दूसरा उनने बोइंग उनसे पहले की कंपनी, सोचिए सपनों में कितनी उड़ान होती है, स्पेस एक्स बहुत बाद में आई, एलोन मस्क एकदम नए आदमी हैं, और उनने कैसे कमाल करके इतनी बड़ी फ्रंट लीडिंग कंपनी खड़ी की है कि नासा इज आल्सो रिलाइंग ऑन देयर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन क्रू कहते हैं। और बोइंग इतना पुराना बड़ा प्लेयर है, आप और हम उसको सिर्फ हवाई जहाज के नाम से जानते हैं कि भैया हवाई जहाज बनाने वाली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज,
भारत दुनिया में 2 ही बड़ी कंपनी है, एक है बोइंग, दूसरा है एयरबस। बोइंग अमेरिकन है, एयरबस यूरोपियन है ना। बोइंग, विलियम बोइंग ने 1930 में शुरू की थी, राइट ब्रदर्स से इंस्पायर होके। और कैसे वो कहानी, वो अलग बात है कि राइट ब्रदर्स के भी स्ट्रगल करना पड़ा, फिर प्लेन बनाया, और उनकी कंपनी बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी भी है, डिफेंस में भी काम करती है। और उनका स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट पहले ही जब से बन रहा है तब से कई चुनौतियों से वो गुजरा है, कई बार उसमें चैलेंजेस आए हैं, फिर रेक्टिफाई हुए हैं, और जब भेजा जाता है तो किसी की गलती नहीं है, ये मत आप इस चीज को गलती ना कहें। साइंस में गलती के नाम की कोई चीज नहीं होती, हमेशा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, पॉसिबल सिनेरियो होता है, और एक एरर होती है, हो सकता है वो ह्यूमन एरर हो, एंड वी कॉल टू एर इज ह्यूमन, मतलब इंसान से तो गलती होने की संभावना है, इसलिए हम मशीन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि मशीन हमने बनाई है। बड़ा हाँ सही बात है मतलब सर। विरोधाभास अपने हो जाता है हमारे तर्क में। जी सर हाँ, इंडिया में भी है ना सर, स्काई रूट करके है ना, स्काई रूट एरोस्पेस करके। जितने चेहरों के कैमरे अभी ऑन हो रहे हैं उतने कॉन्वर्सेशन में नहीं हुए थे, इसका मतलब बहुत लोग आनंद ले रहे हैं और अपना क्वेश्चन रख के यस तैयार कर सर। रहे हैं, मतलब मेरे साथ। तो स्टार लाइनर जो है वो गया, स्टार लाइनर जब लेके जा रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। अब ये 90 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। और ये इतना बड़ा है स्पेस स्टेशन कि एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का साइज है, अगर उसके सोलर पैनल्स को, इनको सोलर एरे कहा जाता है बड़े स्केल पे, और उसके जो मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं क्यूब में, जैसे सिलेंड्रिकल क्यूब्स में। सिलेंड्रिकल इसलिए है कि भाई साहब आपको रॉकेट में ले जाना है, आपको डिजाइन, आपको इंटीरियर इस तरीके से करना है कि एवरीथिंग शुड बी विद इन द रॉकेट्स अवेलेबल स्पेस। हमारे पास कैपेबिलिटीज है 4000 लो अर्थ ऑर्बिट में, 8000, मतलब 8000 अप टू लोअर अर्थ ऑर्बिट में, अगर चांद पे भेजना है तो 4000 किलोग्राम तक का हम भेज सकते हैं जीएसएलवी मार्क 3 से। पर अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में सैटर्न 5 अपोलो जो लॉन्च किया था, या एलॉन मस्क का जो फाल्कन हैवी है जिसको वो यूज करते हैं, 1 लाख किलोग्राम तक का भार वो अंतरिक्ष में भेज सकता है। तो अब देखिए ये जो एस्ट्रोनॉट को लेके गया है ना स्टार लाइनर, इसमें हीलियम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में, इवन उसके फ्यूल टेक्नोलॉजी में हीलियम बड़ा रोल प्ले करता है। हीलियम लीक हो गया है, और कुछ थ्रस्टर, अब आप फिजिक्स के टीचर हैं तो और मजा आएगा बात करने में। थ्रस्टर ये छोटे छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं हर डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल जायरोस्कोपिक ओरिएंटेशन के लिए, क्योंकि वो तो स्पेस है। अब आपको मुड़ना है तो आपको थ्रस्ट न्यूटन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। न्यूटन तो बहुत, आपको यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल ईच एंड एवरी टाइम। अगर आज के समय में न्यूटन होता तो शायद, न्यूटन तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन हो सकता क्लेम करने लगती है कि जहां जहां न्यूटन थर्ड नियम इस्तेमाल हो रहा है प्लीज पे द लाइसेंस फी, है ना। तो छोटे छोटे रेट्रो रॉकेट्स जो हैं वो ऑन होते हैं ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए। तो लगभग 28 उसमें है, 28-29, जिसमें से 5 फेल हो गए थे। अब देखिए लेवल ऑफ हाई एक्यूरेसी ऑफ नासा, 5 फेल होने से भी लाया जा सकता है वापस, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कहता है, बट दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज इट्स अ ह्यूमन लाइफ, and at the same time it's American space program at stake. So they are strongly believing about better and advanced technology demonstration. So what they did it, उन्होंने कहा भैया आईएसएस में आप गए थे 8 दिन के लिए, जैसे ऐसा आमतौर पे आज के जमाने में तो नहीं होता है कि मेहमान आए फिर जाने का नाम ही ना लें, परंतु ऐसा है सिचुएशन आईएसएस पे हो चुकी है कि जो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी वहां रह रहे हैं उनके साथ में ये 2 और जुड़ गए, तो इनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था, ये आप सोचिए जिस ड्यूरेशन के लिए आए थे वो एक्सपैंड होती चली जा रही है ना। उसके बाद अब चिंता ना करें, दूसरी उनकी प्राइवेट कंपनी प्लेयर है जो उनको खाना, कपड़े और बाकी साइंटिफिक इक्विपमेंट को ऑटोमेटिक व्हीकल से भेज देते हैं, एटीवी कहते हैं, ऑटोनॉमस चलता है वो। अब बात रही कि नासा कर क्या रहा है। नासा बोइंग के साथ बैठ के डिटेल केस स्टडी कर रहा है, बोइंग पे अब पूरा काम नहीं छोड़ रहा है वो। अब वो नासा अपनी स्टाइल में जो इंजीनियरिंग टीम को लेके, जैसे अपोलो 13 में उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया था ना उस जनरेशन के साइंटिस्ट ने, एक एक बारीक पॉसिबल सिनेरियोस को कैलकुलेट किया जा रहा है कि अगर स्टार लाइनर को हम ठीक नहीं कर पाते हैं या इस कदर नहीं बना पाते हैं कि दोबारा उनको लाया जाए उसमें, तो दूसरा सिनेरियो क्या है, क्या ना भैया, स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू लॉन्च शेड्यूल था एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए, उनसे कहा जा रहा है अभी भैया आप ना जाएं, अभी हम इसको लेके जाएंगे, 2 को लेके 4 की सीट है, 2 वहां से लेके आएंगे वापस। ओके, एक सिनेरियो। अब वो तो ऐसा है नहीं कि आपने बाहर आपकी रखी हुई हीरो होंडा उठाई और निकल लिए, वो तो पूरा का पूरा एक थीमेटिक टाइमलाइन के साथ होता है। वो स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन 2 से 3 महीने का मिशन होते हैं, एक सिनेरियो। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कि दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या है
कि क्या हम रशियन स्पेस प्रोग्राम का एक सोयूज मॉडल हमेशा इमरजेंसी स्कैप के लिए लगा है इस पे आईएसएस में। रशियन टेक्नोलॉजी हमेशा भरोसेमंद है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो भी सिनेरियो इस्तेमाल हो सकता है। तो दे आर माइन्यूटली एनालाइजिंग स्टडी, वो उसी को तो साइंस ऑब्जर्वेशन कहते हैं, कि हर पॉसिबल सिनेरियो को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैथमेटिकली सुपर कंप्यूटिंग से और लॉजिकल रीजनिंग से वो चेक कर रहे हैं। 5 नॉन परफॉर्मिंग थ्रस्टर में से 4 उनने वापस ठीक कर लिए हैं, एक अभी भी नॉन परफॉर्मिंग है। हीलियम लीक को वो देख रहे हैं कि कितनी डेंजरस हो सकती है अर्थ पे। अब डर इस बात का ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जहां आईएसएस है लगभग 400 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है अर्थ से, है ना। ये उड़ना बोल रहा हूं मैं, देखिए हम अर्थ पे रहते रहते उड़ना बोलने लगते हैं। उड़ना शब्द तो सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण आता है। बर्ड और या प्लेन, आपको लिफ्ट जनरेट करना है ना, लिफ्ट लिफ्ट जनरेट करेंगे तभी आप उड़ेंगे ना, पर वहां उड़ना नहीं, वहां तो जस्ट ऑर्बिट कर रहा है आईएसएस। तो उस ऑर्बिटिंग आईएसएस से लाने का सिनेरियो में हीलियम उनकी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए कितना खतरनाक है। पहली बात, अगर वो सब चीजें सेफ हैं और सिग्मा ऑफ एक्यूरेसी में सिग्मा इस्तेमाल किया जाता है, आप पढ़ेंगे एडवांस इंजीनियरिंग में, तो वो सिग्मा की वैल्यू को देखा जाएगा कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन किस स्केल पे है, तब वो डिसीजन लिया जाएगा। जब बहुत ही मिनिमल है तो, नहीं तो स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू से लाया जाएगा। पर आपको बता दें, एक सर जो है डॉक्टर अतुल, हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है सर ले आएंगे। मैं आपको बता दूं सर, चुनौती यह है कि जिस स्पेस सूट को ये लोग पहन के गए हैं, ड्रैगन क्रू जिस डिजाइन है जिस स्पेस सूट के लिए, वो अलग कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है, वो दोनों अलग अलग है। वो भी एक चुनौती है कि उन स्पेस सूट्स के साथ वापस इसमें कैसे आएंगे। तो सिनेरियोज बहुत सारे हैं, पर कमाल की बात है कि फरवरी 2025 बोला जा रहा है मैक्सिमम लिमिट। पर हमारी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्हें हमें भारत में होस्ट करने का हमारी काउंसिल को गौरव प्राप्त हुआ था, हमने इनवाइट किया था इंडिया उनको 2013 में, तो दिल्ली आई थी, कोलकाता आई थी और मुंबई आई थी। एंड व्हेन आई वाज इन नेहरू साइंस सेंटर मुंबई, अभी भोपाल के पहले, तो आप सोचिए मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे डायरेक्टर साहब हमारी टीम के साथ उनको होस्ट करने की हमारे साइंस सेंटर में। तो एक बात मैंने फील की उनसे बात करके, एस्ट्रोनॉट्स का जो आईक्यू स्केल है उससे ज्यादा उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो ट्रेनिंग को मिलती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके लिए वो नॉर्मल है। आम आदमी घबरा जाएगा अगर ट्रेन, अगर बीच में यहां से भोपाल से जबलपुर जाने वाली ट्रेन बीच में इंजन फेल हो जाए तो उसको दसों समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, भैया अब क्या होगा। पर वहां पे वो इतनी सुकून के साथ अपने बाकी के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो उनको नीचे से कंट्रोल करके दिए जा रहे हैं उनको कर रही हैं, और वो हेल्प भी कर रही हैं। और वो भी सोचा जा रहा है कि इन एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प से क्या उसको आउटर स्पेस में रिपेयर किया जाए। ये सब कैपेबिलिटीज होती हैं आईएसएस पे। उसके लिए एक एक माइन्यूटली फ्रेम को नीचे स्टडी किया जाता है, उस व्हीकल का डमी मॉडल नीचे होता है, तब जाके सिंगल 1-to-1 एनालाइज किया जाता है, और बहुत कमाल का सिनेरियो होता है। इसलिए तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत चैलेंजिंग और अनफॉरगिविंग कहलाती है, माफ नहीं करती ये। मतलब ये नहीं है कि आपने रॉकेट लॉन्च किया, ये अरे सर एक नट या स्क्रू लगाना भूल गया पॉसिबिलिटीज नहीं है सर। सो दिस इज व्हाई दिस इज वेरी हाईली एक्यूरेट एडवांस प्रिसीजन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग। और वो आ जाएंगी, चिंता ना करें, वो आएंगी बिल्कुल आएंगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बहुत। हम बायोलॉजी वालों के दिलों में भी सर ने जो ब्रह्मांड के जो है रहस्य खोजने की क्या बोलते हैं, जिज्ञासा जागृत कर दी है अभी। मतलब जितना जितना कहा जाए, कितनी तारीफ किया जाए उतना कम है सर। थैंक बहुत यू ही सर। अच्छा लगा सर। आप बहुत सबसे ही अच्छा। हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हो, मुझे आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं पता है, हमने स्पेस एंड टाइम में एक चैलेंज कर दिया है टेक्नोलॉजी के एज में, कि हाइजनबर्ग ने बोला है बहुत अच्छे से, हम क्वांटम फिजिक्स में मानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा टी, है ना। तो पोजीशनिंग हमारी अलग अलग है इस प्लैनेट पे, अलग अलग जगह बैठे होगे आप, कमाल देखिए टाइम कॉमन है, जो कि कभी संभव नहीं है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। आपको किसी से मिलना है तो उसकी पोजीशन और उसका टाइम दोनों आपको देना पड़ेगा। पर स्पेस एंड टाइम के इस विरोधाभास में कि टाइम कॉमन है पर हम मिल नहीं सकते, एक दूसरे से मिल रहे हैं टाइम के स्केल पे। तो बोलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। जी सर, प्लीज कैरी ऑन।
थैंक यू सर। थैंक यू साकेत सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपका फंटास्टिक लेक्चर था सर, बहुत ही अच्छे तरीके से, और ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं हर चीज के मामले में, और आपने काफी जगह इन चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, इस नॉलेज का। मैं संजीव पांडे, आप शायद पहचान जी आप। सर, आरडीवीवी में सर बिल्कुल मैं। पांडे सर, सबसे अच्छी बात यह है कि विश्वविद्यालय के ये प्रोडक्ट है अपने आरडीवीवी के सर, हाँ हाँ और हाँ। खालसा कॉलेज के भी पढ़े हुए हैं। सर अच्छा। खालसा सर मेरा जो रॉकेट आप अगर बोलेंगे ना, तो मेरा फर्स्ट स्टेज स्कूलिंग से है। 11-12 जो है काडावारा से बिल्डअप है, फाउंडेशनल, जिसे सॉलिड रॉकेट बूस्टर कहते हैं, रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए। प्राइमरी स्टेज जो है खालसा कॉलेज में है। और जैसे कि जीएसएलवी मार्क 3 एडवांस रॉकेट है जो लिक्विड फ्यूल यूज करता है, वो यूनिवर्सिटी है जिसने दिशा और दशा दोनों डिपार्टमेंट ऑफ आरडीवीवी के आपके समय कौन थे प्रोफेसर अपने फिजिक्स प्रोफेसर पांडे सर और प्रोफेसर जौहरी सर और प्रोफेसर वाजपेयी सर आज भी कनेक्टेड हैं। और भी प्रोफेसर पांडे सर के अलावा संतोष सर, और संयोग से चंद्रा सर से भी पढ़ने का मौका मिला, मैडम से भी मिला। चंद्रा सर नहीं थे उस समय? चंद्रा सर थे सर। सही, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि चंद्रा सर के समय भी मुझे मौका रहा। तो बहुत से हमारे गुरुओं का सपोर्ट है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जहां भी हो सर, आपके फैकल्टीज से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि साइंस सेंटर्स विजिट जरूर करिएगा। हो सके तो अपने विद्यार्थियों को भी लाएं, अगर मध्य प्रदेश में है तो भोपाल जरूर आए। भोपाल जरूर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। जरूर कांटेक्ट करेंगे सर आपसे। जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुमति दें तो सर मैं मीटिंग से निकल सकता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंडोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का इतना सुनने के लिए, और बोर होने के लिए भी। पता नहीं किन किन को परेशानी, नहीं सर, परंतु नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद सबको। बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर, Thank you, बिल्कुल sir. बोर नहीं। थैंक यू सर, नमस्कार।